قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من صمت نجا. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diam maka dia selamat. दुनिया और आखिरत में सलामती का एक बेहतरीन उसूल खामोश रहना है। الأصول الأفضل الأصول الجميل في السلامة في الدنيا والآخرة هو الصمت وهو السكوت. Dasar-dasar yang paling utama di dalam memperoleh keselamatan adalah di dunia, keselamatan di dunia adalah diam. हदीस पाक में है जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि खामोश रहे, उसे चाहिए कि अच्छी बात करे वरना चुप रहे। قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مع الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. तो हमारा जहन ये होना चाहिए कि हम या तो अच्छी बात करें या खामोश रहें। فينبغي لنا أن نقول خيرا أو لنسكت. Maka hendaklah kita berbicara yang baik-baik atau kalau tidak bisa berbicara yang baik sebaiknya kita diam. अच्छी बात से क्या मुराद है? अच्छी बात से मुराद ये है कि वो बात करें कि जिसका या तो दुनिया का फायदा हो या आखिरत का फायदा, और जिसका ना दुनिया का फायदा ना आखिरत का फायदा, वो बात हमें नहीं करनी चाहिए। ما الكلام الخير؟ ما القول الطيب؟ ما المراد به؟ المراد بالقول الطيب أو بالكلام الخير ينبغي لنا أن نتكلم في شيء يكون فيه فائدة الدنيا أو الآخرة. Apa sih yang disebut dengan ucapan yang baik? Apa yang dimaksud dengan kata-kata yang baik? Yang dimaksud dengan kata-kata yang baik adalah kata-kata yang memiliki faidah, kebaikan. अब हमने नियत ये करनी है कि जब भी हम आपस में बैठेंगे तो अच्छी बात करेंगे वरना चुप रहेंगे, क्योंकि जब हम अच्छी बात नहीं करेंगे तो हम या तो ग़ीबत करेंगे या चुगली करेंगे या किसी और की बुराई करेंगे या किसी मुसलमान का दिल दुखाएंगे, और इन सब सूरतों में हमें आखिरत का नुकसान हो सकता है। ينبغي لنا أن ننوي عندما نجلس في أي مجلس لا نتكلم إلا خيرا. لو نتكلم خيرا فيكون أحسن، لو لا نتكلم في الخير أو لا نسكت فنقع في الذنوب، مثلا في الغيبة أو في النميمة أو في كسر القلب يعني إيذاء المسلم، فهذه الذنوب. Hendaklah kita dan sejak sekarang berniat ketika kita duduk di satu majelis untuk berkata yang baik. Kenapa? Sebab kalau kita mengatakan kata-kata yang mengucapkan kata-kata yang tidak baik, maka kadang-kadang kita akan terjebak ke dalam dosa, kita ghibah, membicarakan aib orang lain. ग़ीबत क्या है? ग़ीबत ये है कि किसी की बुरी बात को, यानी किसी की बुराई को उसके पीछे से बुराई की नीयत से बयान करने को ग़ीबत कहते हैं। ما هي الغيبة؟ ما المراد بالغيبة؟ الغيبة أن تتكلم عادته السيئة بنية السيئة، بنية يعني إساءة، وأنت تتكلم مع شخص آخر عن الشخص الأول. Apa yang dimaksud dengan ghibah? Yaitu ketika kita membicarakan aib, membicarakan kejelekan orang lain
dengan tujuan kita untuk apa? Mencelakakan atau menjelekkan orang lain di hadapan orang lain. Al-ghibatu ashaddu min az-zina. Ghibat zina se sakht hai. Ghibah lebih berbahaya daripada zina. Ghibat haram और जहन्नम में ले जाने वाला काम है. Al-ghibatu haramun wa yuaddi ila jahannam. Riba hukumnya adalah haram dan menyebabkan kita masuk ke neraka jahanam. अब गीबत की एक दो मैं मिसालें आपको देता हूँ. हम कहीं बैठे हुए हैं और हम में से एक शख्स उठ कर गया तो किसी ने कहा अच्छा हुआ चला गया, जब से बैठा था दिमाग खराब कर रहा था, अच्छा हुआ चला गया. ये हमने उसके पीछे बात की, ये हमने गीबत किया और ये गीबत हराम हुई और इस गीबत से हमको ये गीबत हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है. سأضرب بعض الأمثلة عن الغيبة. عندما نجلس في مجلس فهناك شخص قد ذهب منا، خرج منا، ونحن الآن نبدأ نتكلم عنه الذي ذهب عنا، فنقول شكرا فهو ذهب، جميلا، أحسن، ذهب منا، كان يفسد دماغنا، يفسد مخنا. Saya akan memberikan contoh seperti apa itu ghibah. Ketika ada seseorang duduk dengan kita di satu majelis, lalu kemudian dia pergi. Setelah orang itu pergi, lalu kita membicarakan tentang orang tadi yang pergi. Kita bilang ke orang lain, kita bersyukur bahwa orang itu sudah tidak ada di sini. Sebab keberadaannya di sini hanya mengganggu kita saja, hanya merusak pikiran kita saja. Ketika kita membicarakan orang tersebut yang sudah pergi meninggalkan kita, itulah yang disebut dengan ghibah. क्या ऐसा यहाँ होता है? هل يوجد هكذا هنا؟ Apakah ada seperti itu di tempat kita? Di sini ada? Tidak ada. La yujad. नहीं होता. करादल मस्जिद يوجد. هل يوجد خارج المسجد؟ يعني قصده هل يوجد هنا معناه في الناس الاندونيسيين يكون هكذا ام لا؟ ليس في المسجد او خارج المسجد، في عادة الناس يوجد ام لا؟ Apakah ada di antara kita yang punya kebiasaan seperti itu, membicarakan kejelekan orang lain? Ada? Ada, mawjud. आज के बाद इंशाल्लाह ला मौजूद. إن شاء الله ننوي من اليوم ننوي أن لا نغتاب أحد، إن شاء الله لا يكون هذا، لا يكون موجود غيبة في مجلسنا. Insya Allah kita berniat mulai sekarang, setelah ini tidak ada lagi yang melakukan perbuatan ghibah. Insya Allah. इंशाल्लाह Insyaallah. इंशाल्लाह Insyaallah. इंशाल्लाह Insyaallah. आप नियत ये करें कि मैं किसी मुसलमान की उसके पीछे कोई बुराई उस वक्त तक नहीं करूँगा जब तक उसकी बुराई करने की मुझे शरीयत इजाज़त नहीं देती. استحضروا نية لا أغتاب مسلما نهائيا ما دام الشريعة لا تجيزنا لغيبته. Hadirkan niat dan sejak sekarang kita tidak akan pernah menghibah sesama muslim. Hadirkan niat dan sejak sekarang. इंशाअल्लाह Insyaallah. Insyaallah dan sejak sekarang kita hadirkan niat untuk tidak membicarakan aib kejelekan sesama muslim. Insyaallah. अब आप बोलते रहिए और आपके साथ दोहराते रहेंगे. Kita ulangi lagi. Yang tegas jawabnya. Mulai sekarang kita berjanji menghadirkan niat untuk tidak membicarakan aib kejelekan saudara kita sesama muslim. Insyaallah.
Oh, kita ulangi sama-sama ya. Ikutin saya. इंशाअल्लाह। Insyaallah. Saya berjanji. Saya berjanji. Mulai saat ini. Tidak akan. Menghibah. Membicarakan. Aib. Sesama Muslim. Insyaallah. इसी तरह हम ये सोचें कि हम किसी के पीछे क्या क्या बातें करते हैं जो उसकी बुराई होती है, और किसी को इस तरह हम याद करते हैं वो ठिंगना, वो ठिंगना, वो लंबा, लंबू, वो काला, ये उसकी बुराई कर रहे हैं पीछे से, उसकी पीछे से बुराई कर रहे हैं। वो मोटा, तो अब उसको पता चलेगा कि आपने उसको काला बोला, मोटा बोला, लंबू बोला, उसको पता जब चलेगा तो वो खुश तो नहीं होगा, उसको बुरा लगेगा। और आपने सारी बात उसके पीछे की, तो जब उसको बुरा लगेगा और आपका बोलना कोई शरई तौर पर दुरुस्त नहीं था, तो आपको इस तरह गीबत का गुनाह मिलेगा और उसका दिल दुखेगा। तो किसी को उसके किसी बुरे नाम से भी नहीं पुकारना चाहिए, कि इसमें गीबत भी हो जाएगी। और कुरान का एक और हुक्म है, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और दूसरों को बुरे लक़ब से ना पुकारो। तो ये दोनों हुक्म कुरानी के खिलाफ हो जाएगा कि ला यग़्तब, गीबत ना करो। हमने गीबत की, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और बुरे अलक़ाब से ना बुलाओ। तो हमें बुरे अलक़ाब से बुलाया कि अल्लाह की दो नाफरमानियां हो गई। अस्तग़फिरुल्लाह। ينبغي لنا أن نفكر في مجلسنا عندما نتكلم مع الأصدقاء مع الأحباء، هل يوجد فيه غيبة؟ هل يوجد فيه سوء الكلام عن المسلم؟ أحيانا نقول ذلك طويل، وذلك سمين، وذلك أسود، وذلك رجل صغير قصير القامة، طويل القامة، أسود وسمين. هل هناك سؤال؟ هل هذا الكلام عندما يصل إليه هل هو يفرح أم يغضب أم يزعل؟ ماذا؟ طبعا وهو يزعل وهو يغضب فمعناه هذه غيبة. فلو هذه غيبة فنحن نخالف القرآن والسنة، نخالف إطاعة الله، أوامر الله. الله قال في القرآن المجيد لا يغضب بعضكم بعضا، هذا خلاف الشريعة. وثانيا لا تنابزوا بالألقاب، هناك نحن نناديه أو نتنابز بالألقاب السيئة، هذه خلاف الشريعة الثانية. Coba kita berpikir sekarang di majelis kita ini, ya, apakah kita pernah menjuluki saudara kita sesama muslim? Kadang-kadang ada yang posturnya tinggi, kita bilang si tinggi, yang pendek kita sebut si pendek, yang kulitnya hitam kita bilang si hitam. Pernahkah kita mengucapkan kata-kata itu di belakang orangnya? Siapa itu? Tuh si tinggi. Atau kadang-kadang itu si gendut, yang badannya gendut, yang kulitnya hitam, si hitam. Kira-kira kalau orang yang bersangkutan mendengar